The buzzword for 2024 as far as the Indian economy, markets and business goes is infrastructure. It is going to be a year when you see the culmination of a lot of effort to build up core infrastructure in the country and plans to grow at a breakneck speed. Today we have the opportunity to speak with a gentleman who's at the heart of a lot of those infra spends which will change the way the country looks. In a sense, I'm speaking with Mr. Ashwini Vaishnaw. He's Minister of Railways, of course, Communications and Information Technology. Thank you so much, sir, for speaking with us today on the NDTV network. It's an absolute pleasure to talk. Pleasure is mine. Let's start with railways, which is the big one. So many figures out there. I think a 7 trillion rupees budget over the next couple of decades. Work is building up. Can we start with an overview first of what the vision is as far as railways are concerned and what the end goal is? See, for any economy which is growing at a pace of 7-8%, the share of logistics, which mode takes a larger share of the logistics, is very important, because cost of logistics determines the competitiveness of an economy. Rail is practically 1/3 the cost of transportation by road and 10 times cleaner. So that's why all the large economies, they always had serious big investment programs in railway for cargo as well as for passenger transportation. In our country, for a significant 60-65 years, railways was never considered as an entity which needs to be nurtured and grown. It used to be taken as an entity which was a politically important kind of ministry, and it was used for different political purposes. Things changed in 2014. When Prime Minister Narendra Modi ji, he took the responsibility of the country, his focus was, we must make sure that the deficit of investment which was there in railways for a very long period, that should now get rectified. So in 2015-14, that time frame, 14-13 time frame, the investment in railway used to be just about 35,000 crores. For a network of our size, for an economy of this potential, for a country of this number of people, it was peanuts. So Modi ji doubled it, and as the capacity to absorb funds, as in terms of how much work can be done, today the budget is 2,40,000 crore, and that is reflecting in the capacity of the network. We have added 26,000 kilometers in last 9.5 years. We have electrified 40,000 kilometers in the last 9.5 years. Take that as a benchmark, 40,000 kilometers electrification in 9.5 years versus 20,000 in 60 years. 20,000 kilometers in 60 years versus 40,000 in 9.5 years. That is the magnitude of work which is happening. Last year we added 5,200 kilometers of new tracks. That's like adding one full Switzerland to the railway network. 14 kilometers per day is the pace at which we are adding more tracks. Apart from that, making sure that the passenger experience totally changes. 1,309 stations are being reconstructed, redeveloped as world-class stations, and the response in the field is enormous. You go to a small town, and when people talk about how the station is changing, it's phenomenal, amazingly good experience. Then totally new generation of train sets. Vande Bharat train is a super hit. Overall occupancy of Vande Bharat is of the order of 98%, which is huge. Some sections like in Kerala, Vande Bharat occupancy is of the order of 170%. It's amazingly popular, and it basically addresses the aspirations which our younger generation today has and our middle classes has. So making sure that the infrastructure investment deficit which was there, that gets filled up, making sure that right amount of infrastructure which is needed for our country gets done, making sure that the passenger experience changes. All this is part of the overall rail strategy.
So the question is the budget and how it is spent. So 2.4 trillion rupees was, I think, one of the largest budgets allocated to the railways. And it is going very well. I think we are on track to complete the annual entire year's work within first week of March. We would have completed. Okay, so that is a big one, because traditionally in India the problem is not just the money but the ability to spend it. Absolutely. So that is on track. That is absolutely on track, and the pace at which work is happening, it's very satisfying. Prime Minister Modi ji's vision for railways is very big vision. If we are able to translate at least half of that in real work, this will change the country. What is then the capex for the coming year? Because the we railways should maintain this level. Yeah. 2,40,000 crore is a very optimal level. Anywhere between 240 and 260 is what we should maintain, because when we do work at this level of this quantum of work we do, we should continuously focus on quality of work. We should continuously focus on how the planning is done, how simultaneously we have to ramp up the operational and safety standards also. So that's why I think this is a very optimal level, and we should maintain this level for a few more years. Is it safe to say that there has also been a change in strategy as far as running the railways goes? For the longest time, and if I may explain, there was talk of public-private participation. Let's get the private sector to also invest. It's very clear now that this is a top-down government push. We will spend, we will ensure it's done. Has there been a change in the way it's approached? The complexity of railway needs to be understood, right? When you compare it with other infrastructure sectors, compare it, let's say, with the road sector, right? A highway is a flat surface that you create with proper drainage and all. Railway starts with the flat surface with proper drainage and all, with bridges and all. Above that you have the track system. Above that you have the electric OHE system, the signaling system, then the stations. It's a very complex system. This kind of complexity is best handled in the public sector. And this has been the experience worldwide. There are countries which learned the hard way by, let's say, UK. Multiple times they privatized railways, then they had to take it back to the national government, right? So that kind of experience is there behind us. So better to focus on what is the economic advantage we are getting out of it, right? So let's take an example. Today we are roughly $4 trillion economy, right? Probably we would have already crossed $4 trillion mark. We are growing at 7 to 8% real and about 11 to 12% nominal growth. At this pace of growth, we'll be adding close to 3,000 million ton extra cargo. Now, if this kind of extra cargo were to be taken totally by road, what are the implications of that? Implications of that: extra pollution, extra diesel and petrol consumption, correct? Extra number of congestion on the roads. Whereas if you look at all other large economies, suppose 50% of this 1,500 million tons is taken by rail. The amount of petrol, diesel that you save is, it's like 1,60,000 liters per annum. Translate that into 80 rupees per liter, translate that into money, that is like 1,24,000 crore every year. That much saving is there. Cost of transportation, cost of logistics. Road, the average is 3 rupees and few paisa per ton per kilometer. Rail is a rupee and 60 paisa or 50 paisa per ton per kilometer. That much saving for the entire logistics sector, we did a small computation, that is of the order of 1,25,000 crore rupees every year saved. It's huge. So that much importance, that much benefit that the economy gets, that should be driving our investment decision. No, absolutely. It's a no-brainer that railways
can be and should be the game changer, and we'll come to the dedicated freight corridor in just a bit. I just want to come back to the question of the private sector's participation, because there was a push, or at least there was an idea that let's privatize some stations, let's get private sector onto some sections or some routes. Was that abandoned because it didn't finally make sense, or the private sector didn't seem like they were interested? It's too complex a sector for private sector firms. Too complex an entity. Multiple subsystems, all interacting with each other. All of them, if the signaling system fails, right, who takes the liability for the safety of trains? Correct? It's very, very complex. It's like in your body, if you have an ache in your leg, right, you'll be treating the leg. But in the case of railway, if somebody hits your leg, the pain will be somewhere in the head. It's that complex. It's very difficult. So then how do you allocate liabilities on different players in the party? So it becomes very difficult. Contractually also it becomes very complex. I just want to get your vision on a couple of things. Electrification. We are moving at a very high speed and pace on electrifying the railways. By when will we be 100% electrified and updated? Practically 100% electrified on the entire broad gauge route, which is what target we had set. We are practically in that range, and this has brought huge benefits to the railways and to the country. Because one, the maintenance of an electric train and locomotive is significantly easier and simpler compared to a diesel locomotive and diesel train. Two, pollution, huge. Third, dependence on the imported oil reduces. So it has been a very big success story. Entire world is impressed by the clear vision that our Prime Minister had and the way he executed this entire program in the last 9.5 years. I want to come to the dedicated freight corridor. Again, something which everyone who watches policy has been talking about for the last, I think, 2 decades nearly. Yeah, 2007 is when it started actually. When it started. I know that 2004. The Eastern Freight Corridor is done. So the idea was always to separate your freight from your passenger, make it faster, get more freight back on. I think 27-28% is the percentage of It was going down like this. Now it is flat and coming up. When is this going to be complete? Both legs and It's practically complete now, and except for a small section. See, till 2014, how many kilometers were commissioned? Zero. Zilch. Now we have practically the entire network completed, except for a small section near Navi Mumbai, near the JNPT. That particular section had some serious problems in land acquisition and design, which have all been sorted out, and that also is getting completed. So it's making a big difference. The time that it takes for a consignment to start from North India and reach a port on the west coast, phenomenally cut down, practically 70-80% cut down. So what will it mean in terms for logistics in this country? Because the plan is multimodal, where you have a seamless pathway for logistics right from rail. You have Bharatmala, you have Sagarmala, and then rails. Can you give us the full picture here? So we need to integrate the cargo destinations and cargo origins into the railway network. Right. Correct? That is a real multimodal way of working. So we came out with a Gati Shakti cargo terminal policy in December of 2021, and by now we have about 160 Gati Shakti cargo terminals approved, getting constructed, about 60 odd terminals completed, already getting operationalized. Every month it's an addition. So that's a huge thing. That means a person who is setting up a factory somewhere in, let's say, any part of the country is today getting a facility by which the cargo can reach a port seamlessly without worrying about where the check gates are, without worrying about what's happening to the truck, is there a breakdown. So that's a huge thing, and more capacity we add. We need to add about 50,000 kilometers of more tracks to be able to carry the cargo that India
has, that India needs to carry. That much cargo we need to keep this pace of 14 kilometers a day, at least for the next 5-7 years. Then we'll be in a position where we can have zero waiting lists for passengers. Cargo, substantial capacity getting created for cargo. So what is then the goal in terms of how much of India's freight moves to the railways away from the roads? All developed economies, good economies, large-sized economies, if you compare, the range is for heavy cargo, 80, 85, 90% of cargo should be carried by rail. Heavy means like steel, like coal, like things which go in bulk and which has very high density. That is ideally carried by rail and water. These are the best modes. Light cargo, for example, parcel and all, that should be 50-50 carried by rail and road. That's the way most economies will structure their logistics design. That is, and liquid cargo, mostly it should be carried by pipeline. Instead of putting it in a tank, taking it by road or rail, it is better carried by pipeline. That's the transport economics, the way it works. So do we aim to get to a 50-50? About, on aggregate basis, we should be reaching like 55% rail and 45% road is what we should aim at. Then we'll be a very, very competitive economy. The cost of economy, cost of logistics will reduce to anywhere between 7.5% to 8% of the GDP if we do this. And by when do you think that will happen? We are working very hard on that direction, and the country needs it. It's not a sector view. It's a view of transport economics. If you look at transport economics, for example, passenger travel, up to 600-700 kilometers, it is ideally, or maybe 400-500, road is the ideal mode. 400 to 1000 kilometers, rail is the best mode. And above 1000, air is the best mode. We should look at designing our transportation system. We should always look at all the modes and which mode is best suited for a particular segment. We should develop that mode as a country, as a nation, we should develop that mode. भारत में हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि आप फेयर नहीं बढ़ा सकते हैं, और अगर आप फेयर नहीं बढ़ाएंगे तो आप क्वालिटी कैसे देंगे. फिर वंदे भारत शुरू हुआ है और अब मेरे ख्याल से 35 रूट पर है. 65 सर्विसेज चल रही है, 65 सर्विसेज. ओके. उसमें लेकिन एक जो शिकायत आती है कि फेयर बढ़ जाते हैं because they work on the same principles as flights depending on demand etc. नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है. ये इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक करिए. देखिए, पैसेंजर एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है स्टेशन से. आप आज से 9.5 साल पहले 10 साल पहले किसी स्टेशन पे जाते, नाक आपको बंद करके रखना पड़ता. कंडीशन ऐसी थी, राइट. आज सफाइयाँ देखो. एक तरीके से एक पूरा लगातार मोदी जी का प्रयास है कि स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बने, तो पैसेंजर एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट होता है. सेकेंड, ट्रेन्स में टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी को पूरा चेंज किया गया और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. अभी जिस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है टॉयलेट्स, उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, वो फोकस है. और रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, इसमें टाइम लगता है. इतने बड़े काम को, मतलब 60-65 वर्षों की जड़ता जो थी, उसको मोदी जी ने 9.5 वर्षों में एक लेवल पे ले आए, एक उसको इम्पिटस दिया, उसको पुश दिया है और उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया. फेयर की बात आज भी, अगर आप कोई भी चीज़ की अगर प्राइसिंग करोगे, अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपये है तो आप क्या करोगे, प्राइसिंग 120 रुपये करोगे, 110 रुपये करोगे. आज भी रेलवे 100 रुपये की जो कॉस्ट आती है रेलवे की, उसमें प्राइस 100 रुपये से ऊपर नहीं करता है. पैसेंजर के लिए आज भी 45 रुपये प्राइसिंग है, यानी 55% डिस्काउंट दिया हुआ है. यही मेरा सवाल है कि ये कब तक चलेगा. अगर ये सोशल ऑब्लिगेशन है. आज हम करीब भारत सरकार पैसेंजर्स की सेवा के लिए करीब 60,000 करोड़ का सब्सिडी देती है. 60,000 करोड़ का लॉस उठाती है हर साल. उठाती है क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन है. देखो, रेलवे बहुत ही एक अफोर्डेबल मोड है. अभी अमृत भारत ट्रेन स्टार्ट हो रही है. 1000 किलोमीटर की जर्नी एक
गरीब परिवार 1000 किलोमीटर की जर्नी 480 रुपये के आसपास में कर ले, 450 रुपये के आसपास कर ले, तो ये बहुत बड़ी एक सुविधा है। इसको, इस सोशल ऑब्लिगेशन को उठाना चाहिए। तो जो कभी कभार सोशल मीडिया पर या जो लोग कहते हैं कि अब ट्रेन के फेयर बढ़ गए हैं, फ्लाइट जितने हो गए हैं, वो स्नैपशॉट, वो क्यों हो रहा है? बहुत सारा देखो, बहुत सारा इस तरह से भी है कि जब मोदी जी ने रेलवे जैसे सिस्टम को रिफॉर्म करके एक अलग लेवल पे लेके आए और एक साधारण से साधारण मानवी भी आज उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, तो कुछ हमारे विपक्ष के लोग हैं जो इसको पचा नहीं पा रहे, तो वो बार बार कुछ न कुछ पॉइंट निकालते हैं। वो निकालेंगे, हम क्रिटिसिज्म आता है उसको कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं और उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर पाए सिस्टम में, वही हमारा ध्यान रहता है। मोदी जी एकदम स्पष्ट कहते हैं कि हमें रेलवे को ग्लोबली बेंचमार्क करके काम करना है। इसमें टाइम लगेगा, ये लंबी जर्नी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, लगातार लगे रहना है। You spoke about the Amrit Bharat trains, and this is sort of a new feature, new offering for the passenger. Can you tell us a bit about it, and how will this be distinct from what is available, say for example from a Vande Bharat? What is the idea behind it? देखो, दुनिया में ट्रेन्स में दो टेक्नोलॉजीज चलती है, एक है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की टेक्नोलॉजी, एक है पुश पुल टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर का मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? मतलब कि हर तीसरे कोच में ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है, उस पेंटोग्राफ से करंट आती है, करंट नीचे मोटर में और मोटर को घुमाती है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हुआ। दूसरा होता है पुश पुल टेक्नोलॉजी। पुश पुल जनरली यूरोप के कुछ देशों में पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेन के दोनों तरफ इंजन लगता है और दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में चलते हैं, तो एक पुल कर रहा है, एक पुश कर रहा है, करेक्ट। दोनों टेक्नोलॉजीज़ को भारत में मास्टर करना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो और एक्सपोर्टर बनने का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको टेक्नोलॉजी पे मास्टरी करना ज़रूरी है। तो इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ पे मास्टर करना था, इसलिए मोदी जी ने टारगेट दिया था कि ग्लोबली बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या है उसको अपने यहाँ डेवलप करो। तो वंदे भारत डेवलप हुई और अब अमृत भारत डेवलप हुई है। अमृत भारत में अगर कंपेरेटिव लें, पीछे वाले, इससे पहले वाली जो ट्रेन है उससे कंपेयर अगर करो, तो बहुत सारी समस्याएं थी जो झटके की। एक ट्रेन चलने के स्टार्टिंग के टाइम में बड़ा एक झटका सा लगता था, रुकने के टाइम में बड़ा झटका लगता था। तो कपलर्स की टेक्नोलॉजी पूरी चेंज की है, जो सीबीसी कपलर्स थे उसकी जगह सेमी परमानेंट कपलर्स इसमें लगाए। पैसेंजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो टॉयलेट्स पूरी चेंज हुई है, सीट्स के पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, हर तरह की चीज़ों में विंडो की कॉन्फ़िगरेशन और कई चीज़ें बारीक से छोटी चीज़ें ध्यान रख के बनाई गई है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो सेमी परमानेंट कपलर्स लगे हैं उसके कारण सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। एंटी क्लाइमिंग डिवाइसेस लगे हैं इसमें, कई तरह की चीज़ें। फिर ट्रेन की स्टेबिलिटी, जब चलती है ट्रेन की स्टेबिलिटी तब अच्छी होती है जब वो पूरी की पूरी वन एरोडायनेमिक पीस की तरह चले। इट शुड नॉट बी अ फ्रैगमेंटेड बॉडी, it should be like one big solid piece. Then it's like a भाला होता है ना, आपने भाला अगर जाता है, राइट, और एक चेन को फेंको आप, कौन ज़्यादा तेज जाएगा? भाला तेज जाएगा ना, क्योंकि भाला एक सॉलिड चीज़ है, राइट, और चेन एक ब्रोकन फ्रैगमेंटेड चीज़ है। तो ट्रेन को कैसे आप एक सॉलिड चीज़ बनाओ, तो उसके लिए जो बीच वाला जो पैसेज होता है दो कोचेस के बीच में, उसको प्रॉपर कवर करके फुल्ली कवर्ड वेस्टिब्यूल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे इनोवेशंस उसमें। आप एक बार जाके देखो, आपको अच्छा लगेगा। So this has started on 2 routes. What is the plan to expand this? कोई भी ट्रेन रोलिंग स्टॉक और स्पेशली जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन होता है किसी मशीन के साथ, राइट, किसी भी मशीन को जब डेवलप करते हैं तो हमेशा उसमें प्रोटोकॉल ये रहता है इंजीनियरिंग का कि पहले आप डेवलप करो और टेस्ट करो लैब में, लैब से लाके फील्ड में टेस्ट करो, फील्ड में टेस्ट करने के बाद में जब आप रियल में उसको डिप्लॉय करो तो कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आप उसको चला के देखो कि क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, अभी भी क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये दो बनी है, दोनों को चलाएंगे 6-8 महीने, करीब 10 महीने चलाएंगे और फिर इसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट करना होगा फिर सीरियल प्रोडक्शन चालू कर देंगे। साल के 300-400 ट्रेन बनाएंगे। ओके। और इसमें क्या जो फेयर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सारे बहुत नॉमिनल फेयर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल फेयर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल। वर्ल्ड की अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज़ देखें या टॉप 20 इकोनॉमीज़ देखें जो हमारे समकक्ष है,
उन सब में मोस्ट अफोर्डेबल फेयर भारत का है। क्या हमें ऐसे कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है भारत की वो भी तो कम है? हाँ, तो इसीलिए अफोर्डेबल है, मोस्ट अफोर्डेबल है। आप देखो ना, आप वंदे भारत की इक्विवेलेंट ट्रेन अगर जापान या जर्मनी में या कहीं पर भी देखोगे तो उसका एकदम अलग प्राइस है। that's तो true. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप ये जो कई सारे रूट्स हैं उसमें पैसेंजर्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू दिस ट्रेन इन बिग नंबर्स। चेन्नई से बैंगलोर वाला रूट ले लो, बैंगलोर से हैदराबाद वाला रूट ले लो, सो वेरी कंफर्टेबल। यू गो राइट, स्टार्ट फ्रॉम द सिटी सेंटर एंड एंटर द सिटी सेंटर, राइट। आपको कहीं मतलब उतर के टैक्सी लेना, वो सब झमेले खत्म ना। सो पीपल आर लाइकिंग इट अ लॉट। व्हाट आर द ऑक्यूपेंसी लेवल्स लाइक कंपैरेटिवली? 98% है ऑन वंदे भारत। ऑन वंदे भारत, करेक्ट, एग्रीगेट लेवल पे। ओके, एंड ओवरऑल रेलवे में तो हमेशा वेटिंग लिस्ट रहती है, लेकिन अगले 5-6 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी बना रहे हैं, अगले 5-6 साल में वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाएगी। बाय 2030 इस पेस पे काम करते रहे तो वेटिंग लिस्ट वगैरह जीरो हो जाएगी, कहीं नहीं रहेगी। एंड वी कैन होप फॉर मोर बुलेट ट्रेन्स एज वेल। एब्सोल्युटली, फर्स्ट बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। इसका एक्सपीरियंस लोगों, देखो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप कॉम्प्लेक्सिटी समझना अगर चाहो तो देखो, कार जब आप चलाते हो, जब तो 30, 40, 50 की स्पीड पे चल रही है, कोई खास मतलब दिक्कत नहीं आती। जैसे ही 70, 80, 90, 100 की तरफ जाते हैं, वाइब्रेशंस, कार की स्टेबिलिटी, कंट्रोल की स्टेबिलिटी, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है, राइट। व्हील और रोड का जो इंटरेक्शन होता है और व्हील और रेल का जो इंटरेक्शन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। दो स्टील की चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो, उसके पीछे पूरी साइंस है। तो ये पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिज़ाइन करना, बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और पीएम साहब का बहुत बड़ा फोकस है। देखो, आप हाई स्पीड रेल को इकोनॉमिक नज़रिए से देखो, डोंट सी इट एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। आपका क्लासिक एग्जाम्पल है टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, करेक्ट। दीज 5 cities, these are large economies in themselves. When a high speed rail connects them, जैसे एक हाई स्पीड रेल से कनेक्ट हो जाते हैं, ये पांचों की पांचों इकोनॉमी एक इकोनॉमी बन जाती है। तो जीडीपी 1+1 2 नहीं होता है, जीडीपी 1+1 5 हो जाता है उसमें। दैट्स द बिग मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। तो अपने जो पहला ये सेक्शन बना है, मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आनंद और अहमदाबाद, ये जो 8 इकोनॉमीज़ हैं, ये 8 की 8 इकोनॉमी सिंगल इकोनॉमी बन जाएगी। कैसे? मान लो कोई डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल फैशन डिज़ाइनर है, कोई आनंद में रहती है, उसको अपना प्रेजेंटेशन करना मुंबई में, 1-1.5 घंटे के गैप में गई, प्रेजेंटेशन किया, वापस आ गए शाम को, करेक्ट। दैट्स द बिग चेंज विच हैपन्स इन केस ऑफ हाई स्पीड रेल। इसलिए इस फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद में वी शुड डेफिनेटली look at more projects. So, two-part question. When will we have the first experience in India? 2026. 2026 का टारगेट है, 15 अगस्त 2026 तक पहला सेक्शन। We are on track. सूरत से बिलीमोरा के बीच में खुलना चाहिए। We are on track. And where will be the next one? अभी रुको। But it's in the works. Yes, करेंगे, अच्छा करेंगे। और देश, बहुत बड़ी बात है। देखो, आप इसमें ये भी समझो, आप इसमें कई ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि बहुत ही प्रिसीजन के हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, जो मोल्ड लगता है इसके गर्डर को कास्ट करने के लिए, वो मोल्ड आज हिंदुस्तान के डेवलपर्स, जिस कंट्री से हम लोग ने शुरू में इंपोर्ट करना पड़ा था, आज हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग टू दैट वेरी कंट्री। इतना रैपिड इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। पीएम साहब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं हाई स्पीड रेल के बारे में। जब भी वो हाई स्पीड रेल के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि देखो, ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे काम करने का तरीका बदलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देश में काम करने का तरीका बदलता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आप कैसे टाइम पे एग्जीक्यूट करोगे, तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिज़ाइन को कैसे प्रिसाइज करोगे, तो डिज़ाइन सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बेटर करोगे, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पैक्ट बाकी सब जगह आएगा। ये सब चीज़ें। No, that's an important point, Mr. Minister, because it has created a whole infrastructure around railways.
Which is also why we were so keen to talk about this. Now you have a slew of companies, private companies, who are growing because they have to cater to this technology. Which brings me to the next question. You have an ambitious plan, you have a big plan. Do you have the capability within the country available in the private sector to execute it? Absolutely. Because that's where we get stuck in execution. Absolutely. As I said, out of the 2,40,000 crore capex budget that we have practically done about 70% by the end of December. Or actually it is 77%. Okay. It's of that order, 74 or 77% of that order, right? That's possible because there's a huge ecosystem which is supporting the entire execution. Methods have been changed. PM साहब का हमेशा एक फोकस रहता है बारीकी से चीज़ों को देखो और उसमें रिफॉर्म्स करो. काम करने का तरीका, कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, डिज़ाइन की कैसी कैपेबिलिटीज़ है, सुपरविजन कैसे बेटर होगा. बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है. लैंड एक्विजिशन में रिटायर्ड पटवारी को रिटायर्ड तलाटी को लगाओ, राइट. इस तरह की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसके कारण आज कंपनीज़ की कैपेबिलिटी भी बढ़ी है, काम करने की ताकत बढ़ी है उनकी. And many of the design companies are on a hiring spree. They are like increasing their headcount every month. You talk to them and they are saying that we have added so many people, we have added one more center. So that's second. There are some very serious technology companies in our country, very serious technology companies which do not have to depend upon importing technology. They are capable of developing those technologies in the railway sector specifically, I am saying. And railway की बहुत सारी adjacencies होती हैं. Once you have a railway technology, that straight away goes into marine sector, that straight away goes into power generation sector, that straight away goes into defense sector. बहुत सारी adjacencies होती है. उन adjacencies को भी, for example, जो अपना रेलवे के लोकोमोटिव में पावर ट्रेन होती है, that same power train can be used for running a submarine, for operating a submarine, correct? जो रेलवे में जैसे हम लोग एक हाइड्रोजन ट्रेन डेवलप कर रहे हैं, पीएम साहब ने बहुत अच्छा विजन दिया था कि हाइड्रोजन की पहले ट्रेन डेवलप करो जिससे उस टेक्नोलॉजी पे मास्टरी आएगी, फिर उसको हम मैरीन में और कई जगह यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो वी वुड बी अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज़ विच वुड हैव अ हाइड्रोजन ट्रेन. तो इससे ये सारी की सारी जो कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो रही है, इससे वी विल बिकम अ मेजर एक्सपोर्टिंग नेशन फॉर रेलवे टेक्नोलॉजीज़, फॉर रेलवे प्रोडक्ट्स एंड रेलवे सिस्टम्स. will also become a major design house for the global railway system, because हमारे dedicated university बनाई है पीएम साहब ने गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा में. तो that in fact that is that's a very good example of multimodal. अभी Airbus wanted about 15,000 engineers to be trained for MRO operations, right? So they tied up with Gati Shakti Vishwavidyalaya and dedicated उनके लिए course बना, dedicated syllabus बना, and very soon we'll start having engineers for MRO all over the world. They'll come from the Gati Shakti Vishwavidyalaya. तो पीएम साहब का बहुत क्लियर थ्रस्ट है कि सारे मोड्स को इंटीग्रेट करके सोचो, और इंटीग्रेशन में 1+1 2 नहीं होता, इंटीग्रेशन से 1+1 5 हो जाता. देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसमें से ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, which is also something that you look at, which is something that everyone's interested in knowing. So let me start talking about the telecom bill, which has come in recently, and what is the change it brings for the telecom industry. 5 major reforms in the Telecom Act now, right? It's now an act. Yes. First big reform is user protection. There were multiple number of fraudulent SIMs which people used to take in somebody's name, and or in a single name they would take multiple SIMs and then do all kinds of fraud calls. We were trying to, we were quite successful in that attempt. We were trying to use technology to break that nexus. और अब उसके पीछे एक लीगल बैकिंग आ गई है. यूज़र प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉडुलेंट सिम लेके किसी को इम्पर्सनेट करके कॉल करना, सिम बॉक्स लेके मल्टीपल कॉल्स करके फ्रॉड करना, किसी के दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें थी, बहुत सारे जो फ्रॉड के मेथड्स थे, उनके लिए भयंकर पनिशमेंट है इसमें. 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड 50 लाख रुपीज़ तक की
पेनल्टी। यूज़र प्रोटेक्शन पे बहुत बड़ा फोकस है। सेकंड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मान लो एक यूज़र का किसी एक टेलीकॉम कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, IVRS फ़ोन करते हैं, 3 दबाइए, 5 दबाइए, पता नहीं कब तक वो चलता रहता है, राइट। एब्सोल्युटली डिजिटल ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बनाएंगे इन विच all the telecom sector players will be obligated to give reply within a time frame and solve the problems. तो यूज़र प्रोटेक्शन बहुत बड़ा है। सेकेंड, लाइसेंस रिफॉर्म्स। एक लाइसेंस परमिट राज वाला ज़माना ख़त्म होना चाहिए। मोदी जी का बहुत स्पष्ट है कॉलोनियल माइंडसेट। वो जो माइंडसेट था जिसमें हम एक मतलब एडवर्सरीज़ की तरह काम करते थे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ा लाइसेंस रिफॉर्म्स है। 100 से ज़्यादा टाइप के लाइसेंस थे। एक एक व्यक्ति को 4-4, 5-5, 8-8, 10-10, 20-20 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे और हज़ारों की संख्या में लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स होते थे। सारा चेंज होकर बहुत सिंपल ऑथराइजेशन, 2-3 पेज का एक सिंपल सा ऑथराइजेशन लेटर होगा। मे बी केवल एक QR कोड में भी कन्वर्ट हो सकता है वो सारा का सारा। इट विल बिकम एज सिंपल एज दैट। सिग्निफिकेंट क्लीनिंग अब उसमें हो जाती है। थर्ड है बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर था कि स्पेक्ट्रम को ऑक्शन से ही देना चाहिए। क्लियरली उसको लीगलाइज किया, उसको लॉ में डाले और उसको एक्सपैंड किया और क्लियर लिखा ऑक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल एंड इट विल बी प्रेफरेबली इट विल बी एलोकेटेड बाय ऑक्शन, राइट। कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस को चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, फायर डिपार्टमेंट को चाहिए, वो तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनको कार्व आउट कर दिया इसमें से। शिपिंग के लिए चाहिए, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए चाहिए, वो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको भी कार्व आउट कर दिया पब्लिक इंटरेस्ट। टेक्निकली जो डिफ़िकल्ट था, फॉर एग्जांपल 2 टावर के बीच में एक बैकहॉल है, सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड बाय अदर टावर ऑल्सो। सैटेलाइट का भी एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी गेट्स रीयूज्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो टेक्निकली नॉट फिजिबल सिनेरियोज हैं उसको भी कार्व आउट करके एकदम स्पेसिफाई करके नैरोली डिफाइंड स्केड्यूल बनाया, 19 आइटम्स उसमें डाले और भविष्य में कोई डिस्क्रिशन यूज़ न कर पाए और अभी भी डिस्क्रिशन नहीं रहे, इसलिए क्लियर प्रिंसिपल्स डाल दिए। तो ये थर्ड था स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स। चौथा इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करके, कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि राइट ऑफ वे बहुत सुधर सके। जैसे आप अगर आज से 10 साल पहले टावर की परमिशन लेने जाते तो एवरेज टाइम 230 दिन था, आज है 85% ऑफ द केसेस में ज़ीरो और बाकी ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे 7 डेज। तो मोदी जी ने इतने रिफॉर्म किए टेलीकॉम सेक्टर में दैट द सेक्टर हैज़ नाउ कम आउट ऑफ दैट ह्यूज लिटिगेशन का बर्डन से निकल के आज एक वाइब्रेंट सनराइज सेक्टर बना है। तो ये रिफॉर्म का प्रोसेस इस टेलीकॉम एक्ट से और आगे बढ़ता है। लोग कहते हैं इंटरसेप्शन के लिए पहले भी जो व्यवस्था थी वो आज व्यवस्था है। आपने मेरे सवाल को ही और सुप्रीम कोर्ट यही मैं पूछने वाली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक सिस्टम लेआउट किया है जिसमें क्लियर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, वो चेक्स एंड बैलेंसेज इसमें लागू रहेंगे। लोग कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के केस में टेलीकॉम के सिस्टम को गवर्नमेंट ले लेगी। सारी दुनिया में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 3 है: ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी वॉर की सिचुएशन में या नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन में इन तीनों को बचाना सबसे ज़रूरी होता है। आज जहाँ पर भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है उस सब में सबसे पहला गवर्नमेंट का ध्यान जाता है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेव करके रखें। तो ये प्रोटेक्शन पहले भी था, आज भी है, उसमें कोई नया नहीं है। So just to specify, the concern, being voiced that there will be mass surveillance. ऐसा नहीं है, वो there is a very small section of people who are trying to say this. That encryption will not be नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई इंक्रिप्शन के बारे में कोई बात ही नहीं। देखो, जितनी भी हमारी एप्स हैं वो सारी की सारी गवर्न्ड बाय IT एक्ट। आज से नहीं, 2000 से, राइट, 2000 से IT एक्ट 2000 है। तब से एंटायर द वर्ल्ड ऑफ एप्लीकेशंस, द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट हैज़ बीन गवर्न्ड बाय IT Act. The carrier has been governed by telecom, right? वो की वो व्यवस्था आज भी है। The content is governed by the Ministry of Information and Broadcasting, right? Fintech is governed by the Ministry of Finance. So that entire thing remains today also.
कहीं पे वो देखो क्या होता है ना कि देश की प्रोग्रेस को सब लोग सेलिब्रेट करें, वो रियल पेट्रियोटिज्म है। और देश की प्रोग्रेस से कुछ लोग जल के, विपक्ष में हमारे ऐसे दोस्त हैं कुछ ऐसे जो ये सोचते हैं कि वो विपक्ष में है इसलिए जो कुछ भी अच्छा हो उसको भी नीचा दिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश आगे बढ़ रहा है, इस देश में एक जज्बा है नए काम करने का, एक नए तरीके से डेवलप करने का। पीएम साहब ने जो विश्वास ज़मीन तक साधारण मानवी के परिवार में जो विश्वास दिलाया है, वो विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो उस विश्वास को लेकर आगे चलना चाहिए। Just to talk a bit about the telecom sector and the big, after the AGR case in the Supreme Court, the big change in the telecom sector is that the government of India had to step in to save a private company. You are now, by you I mean the government of India is now a majority owner in Vodafone Idea. It's not a majority owner. Not a majority, but the largest single, 33%. 33% is with you. So you are in effect a large stakeholder in Vodafone Idea. I just want to understand, sir, where you think this is going, because after FY26, once the moratorium is over, this company has to start paying its bills, its debt, which is about 40,000 crores a year. देखो इतना क्लियर है कि आज टेलीकॉम सेक्टर में जो अनसर्टेनिटीज़ थी, AGR की डेफिनेशन क्या है, स्पेक्ट्रम के यूसेज में क्या होना चाहिए, करीब करीब 99% अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज इन्वेस्टर्स टेलीकॉम सेक्टर की तरफ एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। इस टेलीकॉम एक्ट के बाद में जो रही सही अनसर्टेनिटीज़ थी वो भी ख़त्म हो गई है। मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को ग्लोबल बेंचमार्किंग पे ले आए। वो रेगुलेशन में, टेक्नोलॉजी में, रोल आउट में इंडिया 5G का रोल आउट, इट हैज़ बीन द फास्टेस्ट रोल आउट इन द एंटायर वर्ल्ड, फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द एंटायर वर्ल्ड। टुडे अगर अपना इंडिया का 5G रोल आउट अगर हम देखें, 14 मंथ्स, 1 अक्टूबर 22 में लॉन्च किया था पीएम साहब ने। 14 मंथ्स में ऑलरेडी वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट 5G इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर टोटल देखें तो इट इज़ मोर देन द सम ऑफ 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स। आई वॉन्ट टेक नेम्स। इट्स मोर देन दैट। It's such a large rollout. Then second, majority of the equipment used in the 5G rollout has been made in India. Today there are at least 7 companies which are designing telecom equipment, manufacturing them and exporting to about 40 countries. It's not a small task. 8,000 crore के आसपास का टोटल एक्सपोर्ट है टेलीकॉम का। एंड दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट। जो आप टावर के ऊपर देखते हो, बड़े बड़े रेडियो लंबे से लॉन्गिट्यूडिनल दिखते हैं ना आपको, वाला इक्विपमेंट, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। वो सारे आज एक्सपोर्ट करने लगे। राउटर्स में वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोर मैन्युफैक्चरिंग, कोर की डिज़ाइन। अपना देश में बना 4G 5G रोल आउट स्टार्ट हो गया है। Absolutely. सो इट्स आई कैन टेल यू विद गुड गारंटी, within next 3-4 years, India will become a major telecom exporting country, a major railway product exporting company. Sir, but to come back to the point of Vodafone Idea. देखो वो उनके शेयर, उनके मैनेजमेंट से पूछो। Let me ask the question. It's a listed company. I don't want to comment on it. So just the simple point, just if I may, the government has stepped in and saved this company. We have done whatever is supposed to be done. I don't want to comment on companies which are listed. सबके शेयर मार्केट के में प्राइसेस होते हैं। I don't want to comment on any such, whether it's a railway company or telecom company or electronics company, anything. I just don't want to comment on any listed company. Okay. No, I want to understand because there are concerns about a duopoly forming in the country. अब नहीं concerns. Okay. अभी तो telecom sector is looking like a fresh investment cycle has already started in telecom sector. Okay. Let's come to the other, as India becomes one of the large consumers of data, there are now concerns about data privacy, about AI, and that is something which is top of mind. Recently, there has been a very clear diktat on AI and a very clear regulation on AI, the responsibilities with intermediaries. But how do we, sir, keep Indians safe
as these technologies develop? See, this is an evolving field, and we are very clear in our strategy, very clear in our policy mindset. Take the benefits of the new technology, harness those positive things, simultaneously set very clear guardrails, set very clear boundary conditions, set very clear regulatory structure so that the users are not harmed. Users can be harmed in multiple ways. So how do we tackle each of those? Misinformation, deepfakes, impersonation, using modulated voice to do a fraud, commit a fraud, financial fraud. All those things the platforms will have to take responsibility. They will have to deploy technologies. They'll have to deploy methods by which patently false information, patently misinformation, patently information which can create disorder in the society, can create problems for individuals, should be removed. And this is not something which only we are saying, right? The entire world is moving in that direction now. The entire world is worried about the impact that many of the social media platforms are having on their societies, on their institutions. So this is something which, and social media platforms also realize this. We have had lots and lots of consultation with them, and we do everything in a very consultative manner. When the telecom bill was prepared, the consultation started in 2022 January, and it was a very long consultation process. We published a consultation paper, we published a draft bill, and we took in lots and lots of inputs and then came out with the final things. Similarly, we had a very extensive consultation for the DPDP Act, right, for the Post Office Act. Everything we are having a very strong consultative process. So we are consulting with the industry and we have come out with a very good a regulatory framework is the word I would like to use here, where we are able to today, we can say that yes, the platforms will also take the responsibility that they are supposed to take. Just one more follow-up on AI, if you will allow me. It is a problem or an innovation that the world is dealing with. US has its own plan, Europe has its own plan. Is India going to develop its own AI policy, or are we going to do this with other global players? These are globally benchmarked industries. These are industries where practically most countries work in a particular harmonious way, in a common understanding kind of way. That is what will happen in this industry here also, right? So I can say that we recently hosted the global summit on AI, right? So the world does look at India as not only a developer but also a think tank, in that sense that yes, in the thought process, in thought leadership also India will take a big role, because India is no longer a digital divide wala country. It is a country which has a digital lead. If you compare to, in fact, in one of the conferences I was very surprised when somebody from a very rich country, that person was like, when I come to India, I cannot use my credit card. Everywhere people use mobile phones. What will you do to people like us who are not as advanced as you are? That was the question that I was like, no, we are all advanced. And I request you to start using UPI. So No, but it's true. UPI has been a complete game changer. So that way, we are today seen as a digitally leading country. So the thought process and thought leadership will also come from India. But just because you spoke about UPI, if I may say, sir, can UPI continue to be a free service for much longer? Because that is the debate within the industry. UPI has changed the way Indians are using finance. Digital transactions are through the roof. It's, I think, been a globally recognized success. The question is, can it continue to be free to survive and thrive? It's a very big service, and I think it's doing well. And let me not speculate on this point of whether it should continue as a free service or not. These are important policy matters on which we should not be discussing in this kind of forum. Okay, one last question, sir, and you have been very kind with your time, but just one last question, if I may, and it's a question of data protection and privacy of Indians. It's a pressing issue today, and a simple example, if I even start talking about any product,
I'll probably see an ad on my phone in the next few minutes. I do not know who has my data and how. Do you think we need more robust data protection law? There's a data protection board which has to come into being. Can you give us? It's all progressing very well. The DPDP Act, which we passed in the previous session of the Parliament, that act is a very well drafted act. I've had international experts telling me that this is the best balance between an innovation and regulation. There are geographies which took the entire balance towards heavy regulation. There are geographies which took the balance towards heavy innovation. Probably our act is seen as an act which has been able to balance out the innovation and regulation requirements for a society. And this is very robust framework. The rules are practically drafted. We should be able to come out with the rules in a few weeks' time now. Again, for public consultation, we'll be making sure that every stakeholder has a voice to be expressed. And then the digital by design architecture is also ready. Teams are working very hard on implementing it. Okay. Thank you so much, sir, for your time, your patience, and for answering all of our questions. Thank you.